blueprint of here. What is transfer learning? The transformer architecture, encoder, decoder. I think we won't go into transformer architecture. I've had enough of that. ट्रांसफर लर्निंग करते हैं क्योंकि ट्रांसफर लर्निंग इज दैट टेकिंग अ प्री ट्रेन मॉडल एंड डूइंग समथिंग. What is transfer learning? The idea of transfer learning is to leverage the knowledge acquired by a model trained with lots of data on another task. The model A will be trained specifically for task A. Now let's say you want to train model B for a different task. One option would be to train the model from scratch. This could take lots of computation, time, and data. Instead, we could initialize model B with the same weights as model A, transferring the knowledge of model A on task B. When training from scratch, all the model's weights are initialized randomly. In this example, we are training a BERT model on the task of recognizing if two sentences are similar or not. On the left, it's trained from scratch, and on the right, it's fine-tuning a pre-trained model. As we can see, using transfer learning on the pre-trained model yields better results. And it doesn't matter if you train longer. The training from scratch is capped around 70% accuracy, while the pre-trained model beats the 86% easily. This is because pre-trained models are usually trained on large amounts of data that provides the model with a statistical understanding of the language used during pre-training. In computer vision, transfer learning has been applied successfully for almost 10 years. Models are frequently pre-trained on ImageNet, a dataset containing 1.2 million of photo images. Each image is classified by one of 1,000 labels. Training like this on labeled data is called supervised learning. In natural language processing, transfer learning is a bit more recent. A key difference with ImageNet is that the training is usually self-supervised, which means it doesn't require human annotation for the labels. A very common pre-training objective is to guess the next word in a sentence, which only requires lots and lots of text. GPT-2, for instance, was pre-trained this way using the content of 45 million links posted by users on Reddit. Another example of self-supervised pre-training objective is to predict the value of randomly masked words, which is similar to fill-in-the-blank tests you may have done in school. BERT was pre-trained this way using the English Wikipedia and 11,000 unpublished books. In practice, transfer learning is applied on a given model by throwing away its head, that is, its last layers focused on the pre-training objective, and replacing it with a new, randomly initialized head suitable for the task at hand. For instance, when we fine-tuned the BERT model earlier, we removed the head that classified masked words and replaced it with a classifier with two outputs, since our task had two labels. To be as efficient as possible, the pre-trained model used should be as similar as possible to the task it's fine-tuned on. For instance, if the problem is to classify German sentences, it's best to use a German pre-trained model. But with the good comes the bad. The pre-trained model does not only transfer its knowledge, but also any bias it may contain. ImageNet mostly contains images coming from the United States and Western Europe. The models fine-tuned with it usually will perform better on images from these countries. OpenAI also studied the bias in the prediction of its GPT-3 model, which was pre-trained using the guess the next word objective. Changing the gender of the prompt from he was very to she was very changed the predictions from mostly neutral objectives to almost only physical ones. In the model card of the GPT-2 model, OpenAI also acknowledges its bias and discourages its use in systems that interact with humans. यो कोई बोल रहा था तेरी आवाज नहीं आ रही. ओह सॉरी, मैं हार्डवेयर म्यूट पे था. नहीं, मैं यही पूछा था कमेंट्स. आई थिंक मैं ये देख रहा था, वो वही है जो उसने बात की. ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली डोंट pre-train. So even if your company is very special और उसके अलग ये है जो कि सारे कंपनियों के अलग अलग है ही, या डोमेन स्पेसिफिक कुछ और होगा, बट डोंट ट्रेन योर मॉडल फ्रॉम स्क्रैच. Right is the mantra. Basically fine tuning on the other hand is the training done after a model has been pre-trained. To perform fine tuning, you first acquire a pre-trained language model, then perform additional training with datasets specific to your task.
Why not simply train the model for your finance case from this couple of reasons. It was already done the rationale is तो ये हेड निकालो का मतलब समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से वो हेड निकालने का मतलब जो लास्ट लेयर है प्रेडिक्शन वाला, उसका ये करना। अपन ने ये जो यूडासिटी वाला कोर्स किया था उसमें उसने एक इसमें वैसा किया था, राइट? सो इफ यू रिमेंबर विल गो बैक टू दैट. आई एम कंफ्यूजिंग इट विद द अटेंशन हेड। Shouldn't be, right? Because transfer learning is not very transformer specific concept. एंड लाइक ही वाज सेइंग, ये तो इमेजनेट में अपन पहले करते भी थे, ये ट्रांसफर लैंग्वेज वाले वर्ल्ड में ये अभी रिसेंट कर रहे हैं। बट द फैक्ट दैट एक मॉडल के वेट्स से स्टार्ट करना चीज़ें, ना कि रैंडमली स्टार्ट करना, इज़ अ गुड थिंग टू डू. सो आई डोंट थिंक, हालांकि हाँ, दैट हेड मेक्स इट लिटिल बिट ऑफ ये. बट इफ़ यू गो टू यूडासिटी and the course that we did, steroid, काफ़ी कुछ किया था हमने, है ना? स्टाइल ट्रांसफ़र में था क्या वो? Separating style and content. और convolutional style transfer folder. Alright, so in this case we were downloading this model, right? Imagine जो already built models है, वो हमने डाउनलोड किया था, क्योंकि इसके केस में हम लोग ये चाह रहे थे कि एक का स्टाइल और एक का कंटेंट मिक्स करके वो कुछ ये करे. तो उस केस में अपन ने VG19 का फीचर ये डाउनलोड किया था, राइट? एंड दिस इज़ ऑल यूजिंग PyTorch का लाइब्रेरी. इन दिस केस दे आर यूजिंग ट्रांसफॉर्मर की लाइब्रेरी. तो दैट थिंग अपार्ट, you had this pre-trained model downloaded and then you said कि इस pre-trained model के weights change मत करना, क्योंकि अभी जो मैं चेंज करने वाला हूँ वो मेरी जो इमेज मैं जनरेट करना चाहता हूँ, ये मैं उसको ये करना चाह रहा हूँ, उस पर ग्रेडियंट डिसेंट चलाना चाह रहा हूँ, बैक प्रोपेगेशन वगैरह, ना कि मॉडल पे. तो यहाँ पे उसने अपना ये सब बंद किया था. सो दैट मीन्स यू हैव टेकन अ प्री ट्रेन मॉडल एंड यू आर सेइंग आई वोंट चेंज इट्स वेट, राइट? बट इन दिस केस हावेवर, मैंने कहाँ फिर पढ़ा था वो, ये कि उसको एक लेयर फिर तो चेंज करना है, क्योंकि अपने केस में अपन मॉडल को ही चेंज करना चाहते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट था, हालांकि जो मैंने पहले उत्साह से मैं यहाँ आया तो, बट यहाँ पे ये बंद था और इमेज का जो ये था वो चालू किया था उसने, रिक्वायर ग्रेड. तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट. ये देखना, ये कंटेंट जो हमने क्लोन किया था उसका ग्रेडियंट चालू रखा था. दिस इज़ आवर इमेज जो अपने को जनरेट करना था. तो दिस स्लाइटली डिफरेंट, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट होपफुली विल कम टू दिस. आई वेगली रिमेंबर रीडिंग इट और समथिंग डूइंग विद इट कि या. बट टू योर पॉइंट कि वो हेड का मतलब यहाँ पे उसने क्लैरिफाई तो नहीं किया, बट होपफुली एक्चुअली उसका कोड देखेंगे तो तब में भी अपने को समझ में आएगा.
और कुछ बोला क्या उसने? So why not simply train on the model, train the model for your final use case from scratch. Is the able to take advantage of knowledge acquired by initial, right? Since the previous model already trained lots of the ठीक है, वो वही है कि ऑलरेडी तुम्हारे स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं मालूम होगी, बट जनरली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट उसके वेट्स ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है, तो इट विल बी फास्टर टू ट्रेन. एनकोडर डिकोडर में तो नहीं जाना, राइट? दिस अटेंशन, ओरिजिनल आर्किटेक्चर, ये सब हाँ I think ये तो हो गया. टू योर ये क्वेश्चन, जब अपन फाइन ट्यूनिंग इस पे जाएंगे और एक्चुअल कोड में ये लगाएंगे, तब में भी अपने को पता चलेगा कि उसने हेड चेंज किया, प्री ट्रेन मॉडल लिया और हेड चेंज किया और नया हेड लगाया, मतलब क्या किया. मेरा अभी का मानना यह है कि एक लेयर का वेट, जैसे अटेंशन ब्लॉक वगैरह, तो मेरे हिसाब से चेंज नहीं करेगा, जैसे LLM के इसमें बात करूँ तो, बट विल सी. This presentation, automatically generated from the course material, will walk you through the key topics discussed in the document. Let's begin. In this section, we'll explore how transformers solve various tasks, focusing on language models, but also their applications beyond text. We'll also touch on the LLM course documentation, which provides an interactive experience to help you get started. Transformer models have revolutionized natural language processing. We'll delve into how language models work, the different types available, and their applications in text generation, classification, token classification, question answering, summarization, and translation. Language models are designed to understand and generate human language by learning statistical patterns and relationships between words. They predict word probabilities based on context, enabling them to generalize to various natural language processing tasks. There are three main types of language models: encoder only, decoder only, and encoder-decoder. Encoder-only models like BERT are great for understanding text, while decoder-only models like GPT excel at text generation. Encoder-decoder models like T5 combine both approaches for sequence-to-sequence tasks. Text generation involves creating coherent and contextually relevant text based on a prompt. GPT-2, a decoder-only model, is a prime example. It uses byte pair encoding and positional encodings to generate text, making it highly effective for this task. Text classification assigns predefined categories to text documents. यहाँ पे उसने क्या किया था, क्या वो एक बार वो डायग्राम देखे क्या? ये बस यही बता रहा है. आई वाज लाइक, ये तो ठीक है, ये हमने देखा, बट यहाँ पे वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? आई मीन ये कलर कोडिंग और इसका कुछ तो रिश्ता बना रहा है क्या? ये क्या कर रहा है वो मैं समझने की कोशिश कर रहा था. जैसे सिमिलैरिटी, मल्टीपल चॉइस एंड क्लासिफिकेशन, एक कोई पकड़ लेते क्लासिफिकेशन, तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे? Start text extract transformer linear, और ये कुछ कलर कोडिंग का कोई मतलब नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड टू मच इनटू इट. इसका तो कोई कलर नहीं है यहाँ पे, बट ये है टेक्स्ट एंड वर्जन. इज इट ट्रैक्टिंग विथ यू गाइस और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरे को समझ ही नहीं है. नहीं समझने कहाँ से अभी ये क्या? नहीं, आई थिंक ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि देयर आर एनकोडर डिकोडर मॉडल में 3 टाइप के हो सकते हैं लैंग्वेज मॉडल. वन जो या अपने एनकोडर हो सकता है या डिकोडर हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, राइट? अपन ने पूरा जो इतने 2-3-4 दिन से अपन जो कर रहे थे वो तो डिकोडर ओनली मॉडल था. एनकोडर डिकोडर मॉडल भी अपन ने थोड़ा सा देखा जब वो फ्रेंच टू इंग्लिश कर रहा था, राइट? जो उसने पासिंग वे में पास किया, दैट वुड बी एनकोडर. एनकोडर में वो बताएगा, बट आई थिंक देखते हैं कि एनकोडर में क्या बताएगा. बट अभी डिकोडर ओनली मॉडल में ही ब्रॉडली सेड कि ये ज़रा 3 कैटेगरीज है. ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में तुम 3 टाइप के मॉडल बना सकते हो. और फिर डिकोडर ओनली मॉडल में उसने बताया कि प्राइम एग्जांपल तो जीपीटी है, जिसके थ्रू अपन ने देखा सारा कुछ. अब उसके स्लाइड में उसने ये एक पिक्चर दिखाया.
राइट। और हम्म। इस पिक्चर का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या दिखाना चाह रहा है, और ये डिकोडर ओनली के कॉन्टेक्स्ट के स्लाइड में वो बता रहा था, राइट। सो अज्यूम दिस टू बी ओनली डिकोडर पार्ट ऑफ थिंग्स, राइट, एंड दिस इज द आर्किटेक्चर विच वी नो व्हाट ऑल दिस मीन। पर उसके करस्पॉन्डिंग उसके इसमें वो जो रिलेटेड टास्क दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है, क्लासिफिकेशन एंटेलमेंट, और ये कलर कोडिंग या आर्किटेक्चरल ब्लॉक्स के साथ उसका मैचिंग है कि वो कर क्या रहा है, ये समझ में नहीं आया। ना ही उसने उसमें उस वीडियो में बताया। और आई एम जस्ट रीडिंग टू मच इनटू दिस डायग्राम, ये कोई एक कहीं से चिपका रहा है उसने। हाँ, maybe refers to it later on in the video. ठीक है। BERT, an encoder-only model, is widely used byte pair encoding and positional encodings to generate a decoherent and contextual. Combine both approaches for sequence-to-sequence tasks. Text generation involves creating coherent and contextually relevant text based on a prompt. GPT-2, a decoder-only model, is a prime example. It uses byte pair encoding and positional encodings to generate text, making it highly effective for this task. Text classification assigns predefined categories to text documents. BERT, an encoder-only model, is widely used for this task. It employs word piece tokenization and special tokens like SET and CLS to differentiate between sentences and capture overall text representation. Token classification involves assigning labels to each token in a sequence, such as in named entity recognition. BERT can be adapted for this task by adding a token classification head, which is a linear layer that predicts labels for each token. Question answering requires finding answers within a given context. BERT can be used for this task by adding a span classification head, which predicts the start and end positions of the answer in the text. Summarization involves condensing longer text into a shorter version while preserving key information. Encoder-decoder models like BART and T5 are ideal for this task. They are pre-trained using text infilling corruption, which teaches the model to predict missing tokens. Translation converts text from one language to another while preserving meaning. Encoder-decoder models like BART and T5 are well suited for this task. BART adapts to translation by adding a separate encoder to map source language to target language. Transformers are not limited to text. They can also handle other modalities like speech, audio, and images. We'll briefly explore how transformers are applied to these domains. In speech and audio, transformers like Whisper are used for automatic speech recognition. Whisper is an encoder-decoder model pre-trained on a massive dataset of labeled audio data, enabling zero-shot performance across many languages and tasks. In computer vision, transformers like Vision Transformer, VIT, and ConvNext are used for image classification. Other models like DETA, Mask2Former, and GLPN handle tasks such as object detection, segmentation, and depth estimation. Vision Transformer, VIT, processes images by splitting them into patches and using a CLS token to capture the overall image representation. Position embeddings are added to maintain patch ordering before passing them through the transformer encoder. ConvNext is a modern convolutional neural network. It is used for image classification and combines the strengths of convolutional layers with modern network architectures. Now, go check out the LLM course material. It provides an interactive experience to help you understand model architectures and their applications. By grasping common patterns, you can adapt existing models to your specific needs and tasks. So classification, named entity recognition और क्वेश्चन आंसरिंग, इस टाइप की ये चाहिए तो एनकोडर ओनली मॉडल इज सफिशिएंट लाइक बर्ड. Decoder I think is okay कि you have to, it's basically generate something from the underlying probability distribution to the complete sentence, write essays, generate code etc. So this makes sense. this machine का तो मुझे एक चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आ रही कि एनकोडर डिकोडर मॉडल वर्सेस एनकोडर ओनली मॉडल में this model combine.
So if you, so translation makes sense because you have to generate in the new sentence. But summarization, for instance, could be encoder only model or not, because it again generates something. That's why it's a decoder. I think this only इसमें एक बार कोई वीडियो देखे क्या इनकोडर डिकोडर के एग्जांपल का? यही था वो वीडियो, मतलब हाई लेवल पे तो यही था. हाँ, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया, राइट? एक्सप्लेन नहीं किया. मतलब कैसे वो समराइजेशन को इनकोडर डिकोडर की फॉर्म में व्यू कर रहा है. हाँ, ये जैसे इतना ही है उसका, मतलब जो उसने इसमें बोला. तो बस टेक्स्ट में कुछ और है तो देख लेते हैं क्विकली, नहीं तो बढ़ते हैं. समराइजेशन इन्वॉल्व्स कंडेंसिंग longer text into shorter version while preserving its key information, right? So encoder decoder are designed for this. Sequence BART's encoder architecture is very similar to BERT and accepts a token position. BART is pre-trained by corrupting the input and then reconstructing it with decoder. Unlike other encoder, it's basic corruption strategy can only take the text feeling. It is important because the model has to predict the mass tokens and it teaches the model to predict any radio driver handles and click on summarization guide. उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, जो वीडियो में बोला उससे थोड़ा सा टेक्स्ट में ज़्यादा है, बट इन डेप्थ नहीं है वैसा. Which makes the predict the mass token and this gives additional context to this. सीक्वेंस मैं इसमें डाल देता हूँ. इफ़ यू लाइक, इफ़ यू थिंक कि उसको इस पे बाद में आना चाहिए कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसने जो बोला इनकोडर के हिसाब से वो ये बोला है कि जब भी वो पहले जब वो इनकोडर करता है तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर, वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट निकाल रहा होता है सबका, ठीक है. कॉन्टेक्स्ट निकालने के बाद जब उसको समराइज या आंसर में कन्वर्ट करना होता है तो वो इनकोडर को जिस हिसाब से हम अपना प्रॉम्प्ट में देते हैं, राइट, उस हिसाब से सिर्फ वो एक्सप्लेन करने के लिए डिकोडर के फॉर्म में लेता है. लेकिन कॉन्टेक्स्ट उसको ऑलरेडी पहले है पीछे का इनकोडर के थ्रू, तो सिर्फ वो किस हिसाब से लिखना है, आई थिंक दैट ओनली ही यूजेस फॉर डिकोडर. दैट्स व्हाट दोनों यूज कर लिया उसने, पूरा कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर लिया और प्रॉम्प्ट में कैसे जनरेट करना है वैसे भी यूज कर लिया. This is corrupting input and then reconstructing it with decoders. तो यहाँ से उसने कुछ चीज़ें हटाई और ये मतलब करके यहाँ से दी और उसने रीजनरेट करके देखी और मे बी उसने फिर स्कोर इवेल्यूएट किया होगा कि लॉस कितना है एंड देन इस हिसाब से लाइक. सो बेसिकली इन दिस केस इसके पास सीक्वेंस है, बड़ा सीक्वेंस है, राइट, जिसे समराइजेशन करें तो उसका छोटा सीक्वेंस देखना है. तो वो कुछ निकाल रहा है, कुछ फिर जनरेट करवा रहा है, फिर लॉस देख रहा होगा विद द ओरिजिनल टेक्स्ट. The text infilling corruption strategy works the best in text infilling. The number of text spans are replaced with single. This is important because the model has to predict the mass token. लेकिन उसने ये नहीं बताया, राइट, वो कितने लेवल पे करप्ट करता है उसको. 20% लेवल पे करता है, 50% लेवल पे करता है. हाँ, वो वही है. अभी क्या सीन क्या है कि ये आर्किटेक्चर एक चीज़ है, राइट. ये बेसिकली एक फंडा है, उसने दिया है कि ऐसे तुम्हें करना है. अब हर कंपनी ने कुछ टास्क के लिए इस आर्किटेक्चर पे बेस्ड, लेकिन उनके लाइक टास्क स्पेसिफिक थोड़े मॉडल शाइन करते हैं, राइट. तो उनके ये स्पेसिफिक जो जैसे इसने बोला, आर्किटेक्चर है ना, बेसिकली ये आर्किटेक्चर तो ये हो गया कि अगर मेरे को प्री ट्रेन मॉडल पे ही काम करना है तो ये आर्किटेक्चर का कोई मतलब नहीं. अब क्योंकि मेरा इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो गया है तो ये आर्किटेक्चर आके लग गया है उसमें, क्योंकि मैं उसी में अपना ऑलमोस्ट की और वैल्यू लेके आ रहा हूँ, राइट. अपना डिफरेंट क्वेश्चन तो उसके पास अपने खुद के हैं, तो उस बेस पे तो ये सभी पे लग जाएगा. अगर मैं इसको मतलब अपना खुद का ट्रेन करूंगा तो ये लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो अपने वेटेज को
चेंज करेगा हमारे की और वैल्यू के हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड। करेक्ट। अपन ओपन एआई नहीं है तो अपने को उतना आर्किटेक्चर का ये नहीं है, अनलेस एज ए इंजीनियर यू वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या है। अपन सिर्फ नॉर्मल कंपनी वाले हैं और उस हिसाब से देखना है तो फाइन ट्यूनिंग शुड बी इनफ। बट फाइन ट्यूनिंग के केस में भी आई थिंक जनरली फिर तुम्हारे प्री ट्रेन मॉडल भी चाहिए, तो कौन सा प्री ट्रेन मॉडल सही है तुम्हारे लिए, उसमें भी 15 चॉइसेस है राइट, उसमें भी कौन सा चूज करोगे वो भी एक करेक्ट अलग बात। करेक्ट। इसमें तो फिर हमें बहुत स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स व्हाई कंपनी हैज अपर हैंड कि उनको उस डोमेन की कितना डाटा है उनके पास। अगर उसके बेसिस पे वो मॉडल बनाते हैं दैट वुड बी प्रीटी मच मोर एक्यूरेट। तो डाटा ही एक की हो गया है ऑलमोस्ट हर एक डोमेन का, अगर किसी कंपनी के पास है तो। Alright. ये यहाँ पे है तो एनकोड, लेट्स सी कि तुम जैसे कह रहे थे इसमें कुछ और है क्या इन्फो। In this video, we'll study the encoder architecture. An example of a popular encoder-only architecture is BERT, which is the most popular model of its kind. Let's first start by understanding how it works. We'll use a small example using 3 words. We use these as inputs and pass them through the encoder. We retrieve a numerical representation of each word. Here, for example, the encoder converts those 3 words "welcome to NYC" in these 3 sequences of numbers. The encoder outputs exactly 1 sequence of numbers per input word. This numerical representation can also be called a feature vector or a feature tensor. Let's dive in this representation. It contains 1 vector per word that was passed through the encoder. Each of these vectors is a numerical representation of the word in question. The dimension of that vector is defined by the architecture of the model. For the base BERT model, it is 768. These representations contain the value of a word but contextualized. For example, the vector attributed to the word "to" isn't the representation of only the "to" word. It also takes into account the words around it, which we call the context. As in, it looks to the left context, the words on the left of the one we're studying, here the word "welcome," and the context on the right, here the word "NYC," and it outputs a value for the word given its context. It is therefore a contextualized value. One could say that the vector of 768 values holds the meaning of the word within the text. It does this thanks to the self-attention mechanism. The self-attention mechanism relates to different positions or different words in a single sequence in order to compute a representation of that sequence. As we've seen before, this means that the resulting representation of a word has been affected by other words in the sequence. We won't dive into the specifics here, but we'll offer some further readings if you want to get a better understanding at what happens under the hood. So when should one use an encoder? Encoders can be used as standalone models in a wide variety of tasks. For example, BERT, arguably the most famous transformer model, is a standalone encoder model, and at the time of release, it be the state-of-the-art in many sequence classification tasks, question-answering tasks, and masked language modeling, to only cite a few. The idea is that encoders are very powerful at extracting vectors that carry meaningful information about a sequence. This vector can then be handled down the road by additional neurons to make sense of them. Let's take a look at some examples where encoders really shine. First of all, masked language modeling, or MLM. It's the task of predicting a hidden word in a sequence of words. Here, for example, we have hidden the word between "my" and "is." This is one of the objectives with which BERT was trained. It was trained to predict hidden words in a sequence. Encoders shine in this scenario in particular, as bidirectional information is crucial here. If we didn't have the words on the right, "is," "Sylvain," and the dot, then there's very little chance that BERT would have been able to identify "name" as the correct word. The encoder needs to have a good understanding of the sequence in order to predict a masked word, as even if the text is grammatically correct, it does not necessarily make sense in the context of the sequence. As mentioned earlier, encoders are good at doing sequence classification. Sentiment analysis is an example of sequence classification. The model's aim is to identify the sentiment of a sequence. It can range from giving a sequence a rating from 1 to 5 stars if doing review analysis, to giving a positive or negative rating to a sequence, which is what is shown here. For example, here, given the 2 sequences, we use the model to compute a prediction, and to classify the sequences among these 2 classes, positive and negative. While the 2 sequences are very similar, containing the same words, the meaning is entirely different, and the encoder model is able to grasp that difference. डिकोडर पे चले।
In this video, we'll study the decoder architecture. An example of a popular decoder-only architecture is GPT-2. In order to understand how decoders work, we recommend taking a look at the video regarding encoders. They're extremely similar to decoders. One can use a decoder for most of the same tasks as an encoder, albeit with generally a little loss of performance. Let's take the same approach we have taken with the encoder to try and understand the architectural differences between an encoder and a decoder. We'll use a small example using 3 words. We pass them through the decoder. We retrieve a numerical representation for each word. Here, for example, the decoder converts the 3 words welcome to NYC in these 3 sequences of numbers. The decoder outputs exactly 1 sequence of numbers per input word. This numerical representation can also be called a feature vector or a feature tensor. Let's dive in this representation. It contains 1 vector per word that was passed through the decoder. Each of these vectors is a numerical representation of the word in question. The dimension of that vector is defined by the architecture of the model. Where the decoder differs from the encoder is principally with its self-attention mechanism. It's using what is called masked self-attention. Here, for example, if we focus on the word to, we'll see that its vector is absolutely unmodified by the NYC word. That's because all the words on the right, also known as the right context of the word, is masked, rather than benefiting from all the words on the left and right, so the bidirectional context. Decoders only have access to a single context, which can be the left context or the right context. The masked self-attention mechanism differs from the self-attention mechanism by using an additional mask to hide the context on either side of the word. The word's numerical representation will not be affected by the words in the hidden context. So when should one use a decoder? Decoders, like encoders, can be used as standalone models. As they generate a numerical representation, they can also be used in a wide variety of tasks. However, the strength of a decoder lies in the way a word can only have access to its left context. Having only access to their left context, they're inherently good at text generation, the ability to generate a word or a sequence of words given a known sequence of words. This is known as causal language modeling or natural language generation. Here's an example of how causal language modeling works. We start with an initial word, which is my. We use this as input for the decoder. The model outputs a vector of numbers, and this vector contains information about the sequence, which is here a single word. We apply a small transformation to that vector so that it maps to all the words known by the model, which is a mapping that we'll see later called a language modeling head. We identify that the model believes that the most probable following word is We start with an language generation. Here's an example of how causal language modeling works. We start with an initial word, which is my. We use this as input for the decoder. The model outputs a vector of numbers, and this vector contains information about the sequence, which is here a single word. We apply a small transformation to that vector so that it maps to all the words known by the model, which is a mapping that we'll see later called a language modeling head. We identify that the model believes that the most probable following word is name. We then take that new word and add it to the initial sequence. From my, we are now at my name. This is where the autoregressive aspect comes in. Autoregressive models reuse their past outputs as inputs in the following steps. Once again, we do the exact same operation. We cast that sequence through the decoder and retrieve the most probable following word. In this case, it is the word is. We repeat the operation until we're satisfied. Starting from a single word, we've now generated a full sentence. We decide to stop there, but we could continue for a while. GPT-2, for example, has a maximum context size of 1024. We could eventually generate up to 1024 words, and the decoder would still have some memory of the first words in the sequence. इसमें In this जो video, we'll उसने study head the के बारे में बोला encoder-decoder architecture. हाँ लास्ट वाले में my understanding it is kind of the vocabulary or index which is referred to generate the next token. You have a probability distribution, and with that you are generating okay, the next word is going to be is, और my के बाद आएगा name. So that is my understanding of the word head in that context. Right. What I understood from his video is that what we called in our coding as logits,
जो उसने लॉजिट्स was I mean pre softmax और after softmax doesn't matter, but वो पूरे, हाँ, आई थिंक व्हाट दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि पूरे वोकेबलरी में नेक्स्ट वर्ड के लिए वो कितना स्कोर दे रहा है या कितना प्रोबेबिलिटी दे रहा है आफ्टर सॉफ्टमैक्स, दैट इज द हेड, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? Yeah, that's what I understood from what. मुझे मेरा भी वही था कि वो लॉजिट्स की बात कर रहा है जब जैसे उसने बोला. An example. हाँ, वही वो लॉजिट्स जो ये दे रहा था, उसका वेट या खैर अगेन लेट्स नॉट स्पेकुलेट, मे बी जब फाइन ट्यूनिंग की सेक्शन में आएंगे वो पता चलेगा, बिकॉज वी आर स्टिल ड्राइंग दैट टू द ओरिजिनल वीडियो जिसमें उसने बोला था कि हाँ बड़ा मॉडल ले लो और उसके हेड्स निकाल के नए हेड्स लगाओ टाइप्स, तो वो फाइन ट्यूनिंग में होगा. लेट्स सी. Example of a popular encoder-decoder model is T5. In order to understand how the encoder-decoder works, we recommend you check out the videos on encoders and decoders as standalone models. Understanding how they work individually will help understanding how an encoder-decoder works. Let's start from what we've seen about the encoder. The encoder takes words as inputs, casts them through the encoder, and retrieves a numerical representation for each word cast through it. We now know that this numerical representation holds information about the meaning of the sequence. Let's put this aside and add the decoder to the diagram. In this scenario, we're using the decoder in a manner that we haven't seen before. We're passing the outputs of the encoder directly to it. Additionally to the encoder outputs, we also give the decoder a sequence. When prompting the decoder for an output with no initial sequence, we can give it the value that indicates the start of a sequence. And that's where the encoder-decoder magic happens. The encoder accepts a sequence as input. It computes a prediction and outputs a numerical representation. Then, it sends that over to the decoder. It has, in a sense, encoded that sequence. And the decoder, in turn, using this input alongside its usual sequence input, will take a stab at decoding the sequence. The decoder decodes the sequence and outputs a word. As of now, we don't really need to make sense of that word, but we can understand that the decoder is essentially decoding what the encoder has output. The start of sequence word here indicates that it should start decoding the sequence. Now that we have both the encoder numerical representation and an initial generated word, we don't need the encoder anymore. As we have seen before with the decoder, it can act in an auto-regressive manner. The word it has just output can now be used as an input. This, in combination with the numerical representation output by the encoder, can now be used to generate a second word. Please note that the first word is still here, as the model still outputs it. However, we have grayed it out as we have no need for it anymore. We can continue on and on, for example, until the decoder outputs a value that we consider a stopping value, like a dot, meaning the end of a sequence. Here we've seen the full mechanism of the encoder-decoder transformer. Let's go over it one more time. We have an initial sequence that is sent to the encoder. That encoder output is then sent to the decoder for it to be decoded. While it can now discard the encoder after a single use, the decoder will be used several times until we have generated every word that we need. So let's see a concrete example with translation language modeling, also called transduction, which is the act of translating a sequence. Here we would like to translate this English sequence, Welcome to NYC, in French. We're using a transformer model that is trained for that task explicitly. We use the encoder to create a representation of the English sentence. We cast this to the decoder. With the use of the start of sequence word, we ask it to output the first word. It outputs bienvenue, which means welcome. And we then use bienvenue as the input sequence for the decoder. This, alongside the encoder numerical representation, allows the decoder to predict the second word, which is to in English. Finally, we ask the decoder to predict a third word. It predicts NYC, which is correct. We've translated the sentence. Where the encoder-decoder really shines is that we have an encoder and a decoder, which often do not share weights. Therefore, we have an entire block, the encoder, that can be trained to understand the sequence and extract the relevant information. For the translation scenario we've seen earlier, for example, this would mean parsing and understanding what was said in the English language. It would mean extracting information from that language and putting all of that in a vector dense in information. On the other hand, we have the decoder, whose sole purpose is to decode the numerical representation output by the encoder. This decoder can be specialized in a completely different language, or even modality like images or speech. Encoders-decoders are special for several reasons.
Firstly, they're able to manage sequence-to-sequence tasks, like translation that we have just seen. Secondly, the weights between the encoder and the decoder parts are not necessarily shared. Let's take another example of translation. Here, we're translating transformers are powerful, in French. Firstly, this means that from a sequence of 3 words, we're able to generate a sequence of 4 words. One could argue that this could be handled with a decoder that would generate the translation in an auto-regressive manner, and they would be right. Another example of where sequence-to-sequence transformers shine is in summarization. Here we have very long sequence, generally a full text, and we want to summarize it. Since the encoder and decoders are separated, we can have different context lengths. For example, a very long context for the encoder, which handles the text, and a smaller context for the decoder, which handles the summarized sequence. There are a lot of sequence-to-sequence models. This contains a few examples of popular encoder-decoder models available in the Transformers library. Additionally, you can load an encoder and a decoder inside an encoder-decoder model. Therefore, according to the specific task you're targeting, you may choose to use specific encoders and decoders which have proven their worth on these specific tasks. Let's take a quick quiz. Explore the hub and look for Roberta, large MNLI checkpoint. क्या बोल रहे हो करने के लिए? What does it perform? Summarization, classification या generation? Classification तो लग रहा है मेल फीमेल classification करते. What will be the following? What the following code returns? NER is what? Named entity relation. My name is Sylvian and I work at Hugging Space in Brooklyn. Yeah, right. It's an NER. So it will classify into persons here. What should replace ... in this code sample? Fill mask. This is like that fill in the blank. ये था कि ये था? Maybe ये था. ये था क्या? इस केस में क्या बोला उसने? BERT based model and find out. BERT based case. Zero shot classification. Why will this code fail? And this requires labels that need to be identified, right? यही हमने किया था ना? To classify into what? You have to tell it. Can you read labels? Just one is okay. The transformers the transformers library is broken as usual in this file. What does transfer learning mean? Transferring knowledge of pre-trained model to a new model by training it on the same data set. To a new model by initiating second model with the first model's weight. Transferring knowledge of a new model by building second model with the same architecture.
ये आर्किटेक्चर यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, राइट? इट विल हैव सम मोर लीनियर लेयर्स और मे बी, या आई डोंट नो। सेकेंड वाली दिस सेकंड वन तो है, थर्ड वन भी है क्या ये? ये नेसेसरीली ट्रू क्यों नहीं है? मतलब हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, राइट? तो इससे कि प्री ट्रेन मॉडल नए ट्रांसफर द नॉलेज ऑफ अ प्री ट्रेन मॉडल टू अ न्यू मॉडल बाय बिल्डिंग द सेकंड मॉडल विद द सेम आर्किटेक्चर एज द फर्स्ट मॉडल, राइट? आर्किटेक्चर इज सेम, आई एम नॉट सेइंग वेट शुड बी सेम, आई एम सेइंग कि उसका जो भी 15 लेयर उसने डिसाइड किए थे, हर एक लेयर का 500 न्यूरॉन्स का ये था, और उसने बड़े तो कॉर्पस उसमें के कोई साथ ट्रांसफरेंस नहीं हो रहा है ना। तुमने जो लर्निंग की पहले मॉडल के लिए, हाँ वो तुम सेकंड मॉडल में कहाँ लर्न कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। तुम फिर से डेटा दोगे, फिर से ट्रेनिंग करोगे। और सिर्फ आर्किटेक्चर लिया है तुमने, तो तुम कह रहे हो कि इसमें 512 न्यूरॉन है, अगले वाले में भी 512 न्यूरॉन है। दैट्स ऑल। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि मान लो ये मेरा दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स के लिए ड्रॉ करता हूँ मैं। मान लो मेरा ये, अरे यार इसका क्या नाम है? मेरा मान लो प्री ट्रेन मॉडल ये था, जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 ऐसे 3 लेयर वाले इतने इतने थे। एक तरीका तो यह है कि मैंने इसको लिया, अब मैं अपना एक मॉडल ये करना चाह रहा हूँ, बट आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो मैंने लिया तो यही, हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं बोला नहीं, मुझे एक और लेयर चाहिए, और मैंने इसने मान लो 1 मिलियन डॉक्यूमेंट के साथ ट्रेनिंग किया था, और मैं यहाँ पे एक 10K डॉक्यूमेंट के साथ अलग से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो इसने जब इसको वेट्स दिए थे अपने, तो इन सब के वेट्स दिए थे, स्टार्टिंग किया 10K के साथ, इसने वापस इसकी फाइन ट्यूनिंग की। ये प्री ट्रेनिंग थी, ये प्री ट्रेनिंग थी, ये फाइन ट्यूनिंग है। फाइन ट्यूनिंग में करते हुए मैं, एक तो क्वेश्चन ये है कि तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, राइट? सो आई एम सेइंग कि दिस इज पॉसिबल, आर्किटेक्चर अलग हो सकता है, बट माय क्वेश्चन इज आर्किटेक्चर सेम हो ही नहीं सकता, ये क्यों होना जरूरी है? इस पे आना। नहीं नहीं, बस वो आर्किटेक्चर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए उसने उसको सबसेट होने के कारण उसको चूज नहीं किया है। हाँ, अच्छा, तो वैसे बता, तो वही मेरा कहना, ऑप्शनल है तो इसलिए आंसर नहीं है तो ठीक है, बट होने के लिए हो सकता है, क्योंकि Correct. इसके वेट्स तो इसने मान लो सीख लिया, इसने इसका नंबर 100 दिया है, 200 दिया है, 300 दिया है, तो स्टार्ट तो मैंने वैसे भी किया, लेकिन जब मैंने इसके साथ ट्रेन किया तो ये तो नया वेट सीखेगा जो इसके पास नहीं था, विच इज़ फाइन, बट इनके भी तो वेट ट्रेनिंग के कारण चेंज होंगे ना। हाँ, इसके 100 भी हाँ, तो तुम चेंज 101। कर सकते हो उसको, कितने पे लेयर कर दो, कितने भी तुम उसको हाँ, चेंज तो कर मतलब सकता हूँ, वो तो सब मान रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ चेंज करेक्ट। नहीं भी कर सकता। मैं तो कह रहा हूँ कि हम्म, यही आर्किटेक्चर सेम रखो, ट्रेनिंग अभी भी तुम 10K के साथ करोगे, इनके वेट तब भी कर चेंज होंगे, सकते हो। है ना? यस, हाँ, दैट इज पॉसिबल। when you say architecture, आई मीन दिस then लेयर्स एंड नंबर ऑफ then न्यूरॉन्स। by definition it is just the number of nodes. करेक्ट। There is no this thing on the weights of it. करेक्ट। तुम आर्किटेक्चर सेम रख रहे हो तो तुम मतलब कंप्लीटली न्यू ट्रेनिंग डेटा से उसको ट्रेन करो और नया मॉडल बनाओ, एंड यू कैन हैव टू मॉडल्स ऑफ एग्जैक्ट सेम आर्किटेक्चर बट कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा सेट्स एंड ट्रेनिंग आउटपुट्स एंड एवरीथिंग. which I am saying is not correct, which I am saying is, which is I am arguing against. I am saying कि तुम्हारा प्री बिल्ड आर्किटेक्चर है, जिसमें 3 लेयर्स है और हर एक लेयर में इतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, वो 1 हमारा मिलियन प्री ट्रेन्ड मॉडल है, आर्किटेक्चर नहीं है. प्री ट्रेन मॉडल का ये आर्किटेक्चर है, मैं एक बड़े हाँ, कंपनी ने बड़े इंटरनेट कॉर्पस पे इसको सिखाया है ना? तुम पहले आर्किटेक्चर डिसाइड करते हो और फिर मॉडल बनाते हो, राइट? जो बड़े कंपनी ने किया है ना, तो उसने हाँ, आर्किटेक्चर ये डिसाइड किया, उस पर लर्न किया, और ये उसने पब्लिश कर दिया पूरी दुनिया के लिए, करेक्ट. है ना? तो उसमें 3 लेयर्स है, हर एक लेयर में इतने इतने हैं। मैं अभी मेरे कंपनी स्पेसिफिक के लिए, मैं तो बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ, तो मैं स्टार्टिंग वहाँ से कर रहा हूँ कि मैं एक प्री ट्रेन मॉडल उठा रहा हूँ, तो मैंने ये वाला चूज़ किया।
एक तरीका मेरे पास ये है कि मेरा एक मैं आर्किटेक्चर उसमें डिफरेंस लाता हूँ कि इसमें तीन एक मैं मान लो एक मेरा लेयर एडिशनल डालता हूँ या एक लेयर कम करता हूँ जो भी करता हूँ हाँ, तो then the architecture itself is different, ना? डिफरेंट राइट। तो इस What पे अपन the सब मान third रहे हैं, point इस पे is अपन सब saying कि हाँ, तुमने सेम आर्किटेक्चर पे उस पे दूसरा आता हूँ मॉडल उस पे बनाया। आता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वेयर कॉमन ग्राउंड इज कॉमन, जिस पे अपन सब एग्री कर रहे हैं वो पहले मैं निपटाना चाह रहा था। तो एक तो ये है कि मैं फाइन ट्यूनिंग के लिए प्री ट्रेन मॉडल उठाया, उसका आर्किटेक्चर चेंज किया और चेंज किए हुए आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर चेंज किया मतलब मैं एक दो नया लेयर ऐड किया है। इन इन जो एग्जिस्टिंग जो कॉमन आर्किटेक्चर वाले कॉमन जो वेट्स थे वो तो वहाँ से बोरो किया था मैंने ऑलरेडी, तो इनिशियलाइज वो जीरो से नहीं है, रैंडमली इनिशियलाइज नहीं है, उनके इनिशियलाइजेशन से है। और वो इनिशियलाइजेशन का फ़ायदा इसलिए क्योंकि ये इनिशियलाइज्ड ये वेट्स लैंग्वेज को जनरली समझते हैं अच्छा। उसके ऊपर की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैंने एक नया लेयर बनाया और 10K के साथ ट्रेन किया। 10K के साथ जब मैं ट्रेन करूंगा तो ऐसा नहीं कि बस इसके वेट्स नए से जो मैंने बनाए वो सीख लेंगे, जो एग्जिस्टिंग सीखे हुए इनिशियलाइज थे वो भी चेंज होंगे क्योंकि वो बैक प्रोपगेशन से काम करता है, वो सबके वेट चेंज करेगा। तो भले ही मैंने स्टार्ट वहाँ से किया और ये मान लो यहाँ पे 100 था इसका वैल्यू, तो यहाँ से स्टार्ट में इपॉक जीरो पे तो वो 100 ही था और इसका तो कोई रैंडमली सेट वैल्यू था, बट जब ये पूरे इपॉक के साथ बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू चेंज होगा। आर्किटेक्चर भी चेंज था, वैल्यू भी चेंज था, वी ऑल एग्री ऑन दिस, दिस इज ओके। अभी दूसरा एग्जांपल जिसमें मैं ये एडिशनल नोड भी नहीं डालता है ना, सिर्फ 10K से ट्रेन करता हूँ, अल्टीमेटली इसके वापस वैल्यू चेंज होंगे। मेरा मॉडल अभी भी दुनिया से अलग है, इसने जो दुनिया के लिए पब्लिश किया है वो तो एक मॉडल है। अब मेरे मॉडल ने सेम चीज़ पे सेम मॉडल से किया, बट हाँ एक एक्स्ट्रा पर्पज दिया। समझ लेना कि एक ऐसा मॉडल बना जो कि 1 मिलियन प्लस 100 के, अगर इसी कंपनी ने 10K का डेटा मैंने ओपन एआई को दिया होता और ये 1 मिलियन प्लस 10K पे काम कर रहा होता तो भी उसके वेट्स अलग होते, आर्किटेक्चर सेम होता। तो मान लो कि मैं उस टाइप का कर रहा हूँ, तो ये भी पॉसिबल होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आर्किटेक्चर अलग ही होना चाहिए, राइट क्योंकि दोनों केस में वेट्स तो ओरिजिनल लेयर वालों के भी चेंज हो ही रहे दोनों हैं। जेन्युइन केसेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ओनली थिंग जो मेन चीज है जो कि 100% बोल सकते हैं वो वेट का ही है। अदरवाइज यू कैन यूज सेम आर्किटेक्चर डिफरेंट आर्किटेक्चर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ वो उसका उसके इसमें जो बना कहाँ गया वो, what does transfer learning mean? Transferring the knowledge of a pre-trained model to a new model by building with the same architecture. हाँ तो ये सेम आर्किटेक्चर भी हो सकता है, अलग आर्किटेक्चर भी हो सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं है, देन दैट इट मेक्स सेंस। बट नहीं, एक और इसका थॉट प्रोसेस ये हो सकता है कि अगर वो ट्रांसफर लर्निंग बोल रहा है उसका मतलब इनकोडिंग से डिकोडिंग के साइड में जाना है क्या? अगर नहीं इनकोडिंग से डिकोडिंग हाँ साइड में है तो फिर वो अंदर का उसका प्रोसेस चेंज हो गया, राइट? that also maybe what वो you're saying makes sense. हाँ वो भी हो सकता है, राइट? वो कि वो मास्क कर रहा है अलग तरीके से, इधर मास्क नहीं कर रहा है वैसा। हाँ एनकोडर और डिकोडर टाइप के ये अलग ही होंगे। हालांकि एनकोडिंग और डिकोडिंग में उसने जितना बोला कि वो फर्क सिर्फ मास्किंग का है, लेयर्स वेयर्स पे तो नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो इफ इट इज पार्ट ऑफ एन आर्किटेक्चर और नॉट। नहीं, उसने क्या, हमने क्या है कि जो डिकोडिंग का देखा है ना, सेल्फ अटेस्ट का देखा है, राइट? उसने इनकोडिंग में एक और कुछ अलग वर्ड यूज किया था, राइट? तो वो पता नहीं सिर्फ मास्क ही का डिफरेंस है कि और भी का डिफरेंस है, आई डोंट नो। और ये इनकोडिंग और डिकोडिंग वाली बात है क्या, या डिकोडिंग वाली बात है क्या? तो इट इज नॉट दैट क्लियर। ठीक है, आई मीन दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आई जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। टू और लैंग्वेज मॉडल यूजुअली डज नॉट नीड लेबल्स फॉर प्री ट्रेनिंग। ट्रू एंड इट इज सेल्फ सुपरवाइज्ड। Select the sentence that best describes the term model, architecture and weights. ये देखो आ गया हमारे क्वेश्चन। If a model is building its architecture is the blueprint and the weights are the people. यार architecture is a map to build a model. Its weight are the cities represented on the map. Architecture is a succession of mathematical function to build a model. These are the function parameters. I'll go with this. ऐसा कुछ लग रहा है और ये कर दो ये। Which of these types of model would you use for completing prompts with generated text? Decoder ना या sequence to sequence? Decoder.
Which of those types of models would you use for summarization? Encoder, right? अरे नहीं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस होगा ना, sequence to sequence है, अच्छा। दोनों यूज करोगे। मैं हमेशा उसमें एनकोडर और एनकोडर डिकोडर में कंफ्यूज ही रहता हूँ। Which of these types of models would you use for classifying? ये तो एनकोडर होना चाहिए भाई। ये एनकोडर है। What possible source can the bias occurred in the what possible source can the bias occurred observed in a model have? Model is fine-tuned version of the pre-trained model and is data model was trained on and the metric model was तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? metric the model was optimized for is biased। अच्छा metric biased है, मॉडल तो biased नहीं होना चाहिए में से। फर्स्ट वाला भी होना चाहिए। फर्स्ट वाला भी होना चाहिए क्या? The model is a fine-tuned version of created model and it picked up bias from it। ठीक है, तो तीनों आंसर है क्या इसके? ठीक है, I think we are already ये फुली अपन ये करते हैं। दिस इज ये मोर और लेस अगेन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का ही लग रहा है मुझे। What I will do is I will put these two links here। ये तो नहीं है, bias and limitation तो छोड़ दो, बट ये inference with LLM जितना मैंने देखा वो वही है जो ट्रेनिंग के बाद प्रॉम्प्ट दिया तो वो कैसे फ्लो होगा उसके अंदर, राइट। ये लिंक एक बार कर देना कॉपी। हाँ, तो लिंक मैं डाल देता हूँ। होपफुली दिस विल गो एंड सो टुमारो वी कैन स्टार्ट एक्चुअल कोडिंग वाला ये चीज़। और अगर तुम लोग का सेटअप होता है तो और भी अच्छा है। ऑलराइट।